The laboratory test of a blood sample reveals the presence of anti-B antibodies in the blood plasma. This blood sample can be successfully transfused into a person having blood group एंटी-बी एंटीबॉडीज प्रेजेंस से मतलब डोनर का ब्लड ग्रुप ए है. A donor with blood group A can donate to person with blood groups A and AB, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स वाई ऑप्शन सी ए और ए बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ह्यूमन ब्लड the antigens for Rh factor are present. As you know, the antigens for Rh factor are present on the plasma membrane of red blood cells. That's why option C is the correct answer. The antigens for Rh factor are present on the plasma membrane of red blood cells. Next question. The normal pulse rate for a healthy adult in a resting condition ranges from. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 60 to 100. मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन थ्रू एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स valves open or close. The opening or closing of valves is mainly due to the. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज pressure differences on either side of the valves. Means option B is the correct answer. Next question. The given events occur during the circulation of blood through atria and ventricles of the heart. 1. Blood is pushed into the aorta. 2. Aortic semilunar valves are opened. 3. Pulmonary semilunar valves are closed. 4. Arterioventricular valves are pushed open. Which of these given events occur when the left atrium contracts? वैसे तो ये सारे इवेंट्स करेक्ट है, बट हमें उन इवेंट्स को चूज करना है जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो जो करेक्ट है वो 0.3 और 0.4 है. दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर. Blood is pushed into the aorta is wrong. Blood is pushed into left ventricle. Aortic semilunar valves are open. Incorrect है. Aortic semilunar valves are closed. करेक्ट होता. चूंकि यहाँ ओपन लिखा है इसलिए ये इनकरेक्ट है. मीन्स 1 2 इनकरेक्ट है, 3 4 करेक्ट है. जब ब्लड मूव करेगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल. मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Given is the pathway of blood in the circulatory system of the human body. Right atrium to right ventricle, lungs. The given pathway shows the circulation of right atrium और right ventricle में deoxygenated blood होता है. मीन्स ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा हुआ है. और लंग्स में जा रहा है मीन्स हार्ट से लंग्स है. ऑप्शन ए में लिखा है लंग्स टू हार्ट, ऑप्शन डी में भी, तो ए और डी भी इनकरेक्ट है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन सी, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द गिवन इमेजेस. द इमेज ऑफ डिजीज्ड आर्टरी रिप्रेजेंट्स नॉर्मल आर्टरी, डिजीज्ड आर्टरी. ब्लैक नजर आ रहा है. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
As you know, atherosclerosis is commonly referred to as a narrowing of arteries. It is a chronic disease in which there is accumulation of fatty materials, cholesterol or fibrin in arteries. Accumulation of cholesterol is the prime contributor to atherosclerosis. It results in the formation of multiple deposits called plaques within arteries. That's why option C is the correct answer. Next question. The cells that transport organic nutrients from leaves to the other parts of a plant are, as you know, phloem is responsible for transporting food substance throughout plant body. That's why option D, sieve tubes and companion cells is the correct answer. Vessels एंड ट्रैकिड्स इनकरेक्ट है जिस वजह से ऑप्शन ए बी सी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट thrombocytes? As you know, platelets, thrombocytes are not cells but are fragments of large cells of bone marrow called megakaryocytes. They do not have any nucleus and any pigment. The average lifespan of a blood platelet is about 7 to 8 days. Means 7 to 8 days शॉर्टलिस्ट हो गया. ए और सी शॉर्टलिस्ट हो गए. न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और पिगमेंट भी एब्सेंट होता है. हमारे सारे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में थे. दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर. दैट इज न्यूक्लियस एब्सेंट, pigment absent, lifespan 7 to 8 days. Next question. A student performs an experiment to investigate the rate of transpiration at the upper and lower epidermis of a leaf by using a cobalt chloride paper. All the experimental conditions are kept constant. The result of the experiment is illustrated using the given graph. Rate of transpiration, light intensity, lower epidermis, upper epidermis. Which of the following statements correctly infers the graph? As you know, transpiration is closely related to stomata. Nearly 97% of water from plants is lost through stomatal transpiration. So, the more stomata, the higher the transpiration rate. ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हमें कहाँ नज़र आ रहा है? लोअर एपिडर्मिस में. दैट्स वाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. दैट इज लोअर एपिडर्मिस हैज लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा. मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The given diagram represents cross-section through a young non-woody dicot stem. In this diagram, the vascular bundle is labeled as given ऑप्शन ए बी सी डी में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्कुलर बंडल को. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In an experiment, a thin layer of petroleum jelly Vaseline is used to cover the underside of leaves. How does this application affect the plant's physiology? Given option A, B, C, D में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. दैट इज it reduces transpiration rate. Option C, it reduces transpiration rate is the correct answer. Next question. Following are the parts of a growing plant: roots, mature leaves, tubers. In the middle of growing season, the part or parts which act or acts as a source is slash R. Given option A, B, C, D में से जो correct answer है वो है option B, that is 2 only. Only mature leaves act as a source in the middle of growing season. Means option B, 2 only is the correct answer. Next question. Diagram 1 represents a plant in wilted state, while diagram 2 represents the same plant in the normal state. Which of the following conditions are required for the plant shown in diagram 1 to
रीगेन द स्टेट शोन इन डायग्राम 2। डायग्राम 1 में प्लांट विल्टेड है और हम चाहते हैं प्लांट नॉर्मल स्टेट में आ जाए जैसे डायग्राम 2 में। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज्ड। ऑप्शन बी दोनों करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज्ड, rate of transpiration decreased, means option B is the correct answer. Next question. The given flow chart shows the pathway of blood through heart and lungs. The part of heart which has the thickest walls and the highest internal pressure is labeled as राइट एट्रियम से ब्लड मूव करता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ब्लड जाता है लंग्स में, देन लंग से पल्मोनरी वेन की मदद से ब्लड एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। हमसे पूछा गया है थिकेस्ट वॉल किसकी होगी और कहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनल प्रेशर होगा। एज यू नो द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर द थिकेस्ट वन। These are about a ½ inch thick. They have enough force to push blood into the body. तो means left ventricle option 4, that is option D represent कर रहा है। That's why D4 is the correct answer. Next question. Consider the given characteristics of a blood vessel. Blood pressure low, concentration of oxygen high, target organ heart. The blood vessel identified is ब्लड प्रेशर लो है तो मीन्स ये आर्टरी नहीं हो सकती क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाई मीन्स ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो फीमोरल वेन भी नहीं हो सकती। टारगेटेड ऑर्गन हार्ट है मीन्स पल्मोनरी वेन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। दैट्स वाई ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. In the human circulatory system, the blood vessel which has the highest blood pressure is the given option A, B, C, D में से जो correct answer है वो है option A, that is aorta. Aorta has the highest blood pressure, means option A is the correct answer. Next question. The given diagram represents the regulation of blood flow in a vein. What would be the condition of valves X and Y when the adjacent skeletal muscles are contracted and the flow of blood is towards the heart? Skeletal muscles contract करें, blood का flow towards the heart है और हमें X और Y valve की condition बतानी है। X valve तो confirm open होगा, Y valve open भी हो सकता है, close भी हो सकता है। मार्किंग स्कीम के मुताबिक A और D दोनों आंसर्स करेक्ट है बट आप कोई एक मार्क करेंगे, आइदर ए और डी, दोनों नहीं मार्क करके आएंगे। ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, जस्ट मार्क वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन हार्ट. विच ऑफ दीज लेबल्ड वेल्व्स आर करेक्टली अलाइंड विद देयर फंक्शन? राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक, राइट वेंट्रिकल ये है, पल्मोनरी ट्रंक ये है। इसके दरमियान कौन सा वेल्व है, कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करा है वेल्व को? लेटर आर, मीन्स आर इज शॉर्टलिस्टेड। लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा, तो कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करा है? पी। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो करेक्ट लेटर्स को शो कर रहा है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है जो लेटर एस रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ट्राइकस्पिड वेल्व। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान जो वेल्व होता है जो लेटर आर रिप्रेजेंट कर रहा है इस पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है जिसको लेटर क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो है बाइकस्पिड वेल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वेल्व है जिसको लेटर पी रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम है एओर्टिक सेमी लूनर वेल्व। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है जो करेक्ट वेल्व को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है लेटर आर और लेटर पी, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Next question. The given image shows an experimental setup to investigate transpiration in plants. After a few hours, the color of cobalt chloride paper changes from blue to pink. This change of color is due to the, as you know, cobalt chloride paper is used for testing for water leaks. Water turns blue cobalt chloride paper pink. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is water vapors produced by the leaves, means option B is the correct answer.